the Canva application. Here you can find all the categories that you want to make. For example, the stories, flyers, posters, YouTube channel art, banners, CV resumes, etc. All the things. So we go to the recent designs and find what we have made in the recent history. For example, I want to make a logo. I will uh, so जैसा फार्म करने का था ओपन हुए लाजमी में ना हाँ मोबाइल दो वे मोबाइल नहीं अंदर है ये ओपन है और हाँ आज भी तो मैं पर भाई अंदर होना से पहली दवाई है वो तो पड़ी ठीक है मोबाइल भाई अंदर में करो ये मोबाइल से ना जी पास ही तो नहीं पास ये ऑन कर रहा है वीडियो कोई मसला नहीं मैं अंदर भी वीडियो ऑन की थी मतलब पुराने जी मेरे मतलब जैसे ऑन मार ठीक है ना मतलब बिल्कुल सारे क्या देना पहले गूगल चलाते ना आप एप्लीकेशन उसी मैंने जो पहले का सिलेक्ट कर चुका हूँ फिर करना ये दोबारा मैंने जो रखा हूँ वो सेम तरीका से रखा हूँ सिक्योरिटी टैब पे चले सकते हैं ये सिक्योरिटी ये होनी सही है ये अपना पासवर्ड लिख में एक कर सकते हैं तो फोर प्रेसिंग जैसे स्क्रीन लॉक होना चाहिए रीसेट स्क्रीन लॉक यूज करें सेव और अपडेट करें वो लॉट भी खत्म वो लेना पास पॉइंट बिल्कुल how that is so first of all select here and make editing सब लेंगे रवाना कोई इशू नहीं first of all select it and start editing it so after selecting the file you have to just make the change in the color. After making the change in the color you have to make all the changes in the format, and after making the format change we have to change the text style and the font size. The font size that we have selected is normal, and that is the font style that we widely use for making all the posts. So after making all the changes to the text we have to click on the that sign, and as we click on that sign we will have वन मिनट so
we have selected it